सो दृष्टि, हो गई दिवाली शॉपिंग? अरे अभी तो 2 मंथ्स बाकी है, हो जाएगी। हो गई। अरे 1 मंथ बाकी है, हो जाएगी। हो गई। अरे आई हैव 15 days लेफ्ट, हो जाएगी। अब तो हो गई होगी। नहीं हुई। If you're someone like me who waits up until the last moment कि क्या पहनना है, थोड़ा regret भी करता है, don't worry, I've got you covered. I've got some fast delivery options, some options to create outfits with things that you already own, some beg and borrow options, and even some like really budget-friendly options. So let's go. Tip number 1 is that you don't have to go for really heavy options to make your look stand out. You can just like choose the right color. In my opinion, colors like red, navy blue and purple. Purple, by the way, is according to me the color of the season. I love it so much for festive wear. And इस पे अगर थोड़ा सा silver या golden work होगा, I feel like your look will really stand out. And in case you don't have such a set, go for like a simple suit set जिसमें कम काम हो, या is a solid color suit set. Ditch the dupatta and go for like a heavy dupatta on top. Like I have two options here, this golden bandhani dupatta and this chikankari work dupatta, and इसपे थोड़ा sequence भी है which wasn't visible. I went for like the off-white option here. You can similarly choose on the basis of what dupatta you like, accessorize it properly, do a little bit of makeup, wear those matching shoes, and you're good to go. I feel like such looks are so underrated, but they look really nice, minimal, and so festive appropriate. Tip number 2 is mix and match. In case you don't want to invest in anything new and create something new out of things that you already own, here's this one trick that always works for me. Pick a suit जिसका दुपट्टा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. Now make sure the bottom wear of this suit has a palazzo, skirt or sharara, something with a little flair. Ditch the kurti and instead of a kurti, go for like a nice crop top like I went over here, या फिर कोई साड़ी का ब्लाउज या लहंगे का ब्लाउज. You just make sure to play around with the dupatta properly. You can either make pleats like this or keep it on top like this, and in the end you can accessorize it properly with the correct footwear, bag and everything, and again you have your nice mix and match look ready. If taking efforts is not your specialty and आपको सिर्फ अपने outfits में से pick करना है कि क्या choose करूँ, लहंगा, सूट, ये वो, go for an अनारकली. It is the easiest option and सबसे comfy option. अगर floor length अनारकली होगा तो और भी अच्छा. You can either go for a cotton अनारकली and उस पे थोड़ा सा silver golden work होगा, the best. The best part about such अनारकलीज are that you can use it during the festivities and even after festivities. Daily wear में भी I feel like such outfits look really nice. Also, I'm going to present to you the outfit that I like the most out of all the outfits that I'm showing today. It is this purple anarkali. It is so pretty, so festive. I love the work that it has, the flair that it has, the shine, and it's in my favorite color of the season, purple. There's another festive outfit that I found. It is a lehenga set under a budget, because generally we have like two heavy lehengas and we don't want to wear that during festivities because कभी कभी तो majorly हम घर पे ही रहते हैं, हम बाहर भी नहीं जाते. So I found this one, but I'm going to show you how you can style an affordable lehenga and make it look a little more expensive, a little more dressier. So there are 3 things that you keep in mind. First, you accessorize it so pretty well. Second, you drape the dupatta really nicely. Now this one already comes with pleats, so easy था, but अगर नहीं भी होगा तो you can make pleats and style it like a lehenga. Add a belt. इसके साथ again already belt आती है, but in case there's no belt, you can go to any like random वो stores नहीं होते जहाँ पे button, laces वो सब मिलते हैं. Buy a nice thick lace and उसका belt बनवा दो, something that matches your outfit. And the last and most important, go for a can skirt. I cannot find mine, but I have this one from Amazon. You can wear it under your lehenga. उससे एक अच्छा वो ना क्या बोलते हैं, फ्लेयर आएगा, फील आएगा. एंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर लाइक अ कैन स्कर्ट, क्योंकि थोड़ा तो ऑब्वियसली वो हैवी नहीं लगता, मतलब थोड़ा कड़क लगता है बिकॉज इन द एंड वो उसमें वायर जैसा रहता है ना. अगर वो नहीं करना, यू कैन जस्ट वेयर एनी अदर लहंगा स्कर्ट दैट यू हैव जिसमें ज्यादा काम नहीं है बट फ्लेयर ज्यादा है. सो आई एम वेयरिंग माई गोल्डन स्कर्ट अंडरनीथ ओवर हियर. इससे एक अच्छा फ्लेयर और feel आता है, and I love when lehengas look like this, and this is like the before and after, like wearing versus styling the outfit. And these are like the easiest tips I feel like to make your affordable lehengas also look so pretty. Now for the 5th tip, I'll tell you how you can restyle your old lehenga. तो पहले तो कोई भी लहंगा की स्कर्ट ले लो that you really like, okay? It should have flair. Flair is important. For me, if it is lehenga, it has to have flair.
ये क्या था, आई डोंट नो। अब इसके साथ ना डिच द ब्लाउज दैट यू गॉट इट विद, एंड साथ में ना कोई और साड़ी का ब्लाउज ले लो या फिर कोई और लहंगे का ब्लाउज ले लो विच इज हैवी, प्रिटी एंड गोज विद इट। फॉर एग्जाम्पल विद द गोल्डन स्कर्ट ओवर हियर आई वेंट विद द कंट्रास्टिंग ग्रीन ब्लाउज साड़ी का, एंड इसके साथ मैंने गोल्डन दुपट्टा ले लिया टू स्टाइल इट अप। And just like that, I transformed like my old skirt, old blouse and mix match करके I created my own third outfit. So you can basically do that with any लहंगा. And अगर आपके लहंगे की स्कर्ट प्रिंटेड है, जो भी कलर उसमें सबसे ज़्यादा हो या अगर उसमें गोल्डन या सिल्वर काम हो तो आप वो पिक कर लेना एंड वो कलर का ब्लाउज ले लेना, एंड दुपट्टा आप उसके साथ मैचिंग वाला ले सकते हो या फिर अगेन डू द सेम थिंग, जो भी कलर सबसे ज़्यादा है उन प्रिंट्स में से वो कलर का ब्लाउज और दुपट्टा ले लेना। टिप नंबर 6 हैज टू बी बेग और बोरो फ्रॉम योर मॉम्स, योर दादी, एनीवन, बिकॉज उनके ज़माने की जो साड़ियाँ होती है, जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड बहुत इंट्रिकेट होते हैं। लाइक इफ़ आई गो टू बाय दो साड़ीज नाउ एंड आई डिड ड्यूरिंग माई वेडिंग, आई परचेज लाइक फ्यू साड़ीज एंड दे कॉस्ट यू लाइक 20K, 30K, 40K, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जितना बारीक काम उतना expensive I feel. So just borrow it from them and go for contrasting blouses like pink, red और simple blouses like golden और silver। ये वाले ब्लाउज ऑलमोस्ट सबके साथ मैच होते हैं। मतलब अगर साड़ी पे गोल्डन काम है तो गोल्डन ब्लाउज ले लेना, अगर साड़ी पे सिल्वर काम है तो सिल्वर ब्लाउज ले लेना, एंड अगर दोनों ही टाइप के ब्लाउज यू डोंट हैव, गो फॉर अ कंट्रास्टिंग कलर blouse. I think it looks really nice. In case you don't have that, I found this affordable sari option from Myntra. It was so good. इसपे पूरा golden color का काम है and it's like a nice red color, but it's not very heavy, so you can wear it for the festivities as well. I styled it with a golden blouse. इसके साथ जो blouse आया था वो भी अच्छा था, but I wanted to go a little contrast, so I styled it with the golden blouse because it like matches the golden work all around. Anyway, that brings us to the second last tip, and that according to me is choosing the right fabric. One particular fabric that I feel looks so good during festivities is silk. I love wearing anything silk, and अगर आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है तो you can also go for silk, क्योंकि I feel like इसमें थोड़ी गर्मी लगती है, बट मुझे पर्सनली गर्मी नहीं लगती है, सो आई डोंट माइंड। एनीवे, सिल्क फैब्रिक्स में ना सिंपल जो सूट होते हैं, सिंपल साड़ियाँ होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज दे लुक अ लिटिल शाइनी एंड अ लिटिल पार्टी अप्रोप्रिएट. लाइक आई एम वेयरिंग अ सिंपल सिल्क सूट ओवर हियर. It looks so nice and festive appropriate. It doesn't have a lot of work. So my point being, if you go for such simple silk sari or silk suits, they will automatically look nice and festive appropriate. Take hair and makeup seriously because I feel like they can make your outfit look so enhanced. I mean, simple hairstyles, you can find them on Pinterest. Just make 2 braids over here, या फिर दोनों साइड पे ब्रेड लगा के जस्ट ऐड वो बिंदी आती है ना, डायमंड बिंदी, वो ऐड कर दो, इसके साथ वो आर्टिफिशियल गजरा ऐड कर दो, और बेस्ट go for real flowers and make a bun. It will look so nice. And when it comes to makeup, I love shimmery eye and smoky eye with my ethnic wear. I mean, जब आपका outfit पहन के हो जाए ना, just think for a minute or two about these small elements that you can add with your outfit. For example, गजरा, बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, ये सब ना आपके लुक को और enhance करेगा. So yeah, these were all the tips that I have. I'll make sure to leave details of the outfits in the description. In case I don't find the same outfit, I'll link something similar if I find it. So check that out, and I hope you find these tips helpful. And with that, happy Diwali in advance, and I'll see you super soon. Thank you so much for watching. Bye bye.